Good afternoon, everyone. Welcome to the session. I hope I'm live now. People attending live do like the session and subscribe to our Unacademy CAT-alyst channel if you're new to this. So I'm continuing my last mile revision series. Last month we took quick revision series and we had taken like must solve questions part mein 15 sessions on that. So I had created a separate playlist. You can search that playlist typing this must solve questions for CAT 2022. You can search this and maybe write my name and you'll get the entire playlist of 15 videos I have created that. And this month quick last mile revision and also 5 workshops that I have planned for this month. So stay tuned, and apart from me you will get lots of content on this channel, and we have two three other channels also. So lots of good free content and to give you insights. It's not like you will be taught a lot of things. Last few days mein itna zyada bhi dimag nahi kharab karna hai. Normal things, but sometimes small tips can also take you a long way. So that is the purpose of these sessions. We repeatedly take up questions, new questions, and discuss strategies, how you should attempt, how you should approach a mock, how you should think on a question, discuss the concepts maybe sometimes, so that जो भी पढ़े हैं वो थोड़ा revise हो जाए. So that is the purpose of all these sessions. Now this is my Telegram group link. You can find me on Telegram by typing this MBA preparation hyphen Sarthak UN. You can join me in my Telegram group and reach out to me in case you want my assistance in any of your preparation. This just a brief background of mine, and not long back I was also a student and preparing for the exam. So the things which I did as a student and it worked for me, I try and share the same things in my classes. The mistakes that I did, and I learned from others also, what others have done over the past, क्या सही किए क्या गलत किए, so that you will not repeat the same mistakes. Because if you can like rectify the mistakes again, it will take you a long way. Strategizing, doing the right things is important, but not doing the wrong things is also important. Some common mistakes I have seen over the past, people keep repeating in their preparation. So not just me, every faculty tries and like they share the things that you should not do in the preparation process, like skipping a chapter, having biasness for a particular topic. Moment we see some questions on a particular topic, we try and skip that. पढ़ते ही question skip कर देते. So these kind of things like it does affect your overall score at the end, because you don't know what is the optimum score for this year. We can only speculate, but we cannot like exactly point out इतने में 95 आएगा, इतने में 90 आएगा. More or less उतना होगा. You never know. There's always an element of surprise. So your job is to always have an optimum performance. तुम जितना अपना बेस्ट कर सकते हो वो करो. Give them or test in the best possible way, and then let's see क्या score आता है क्या नहीं. But if we have biasness for the chapters, if we are skipping easy questions just because we have not read that chapter and spending our time on difficult questions, that makes our job a little tough. Now November 13 को next all India mock test again. एक अभी yesterday we had all India mock test. November 20th को फिर होगा. 2 consecutive Sundays, 2 consecutive tests. So that will give you a very good idea of what the actual exam is going to be. Very good level of questions. A lot of candidates are participating in this, and it is absolutely free. You don't need any subscription to participate in this mock, so you can just take part in the mock, go through the analysis भी free हो रहा है YouTube में. पूरा mock का analysis कैसे approach करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, everything will get it for free. So do participate. Use my code to register for free. So in today's session, I have again taken up 5 questions, and we'll take up the like questions, discuss about them. उनका solution तो करेंगे. Background concept क्या है, कैसे approach करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए. This was a course that I recently like completed, and you can join me for my live classes by taking a plus or an iconic subscription. I'll talk about that towards the end of the video. But if you're taking a subscription, don't forget to use my code and you'll get a 10% discount on it. Okay. So let us begin. Let us see the first question. How many integral values of x satisfy this inequality? Just a simple inequality here. But the problem with this inequality is we have a square root in it. So 2x plus 6 by 1 minus x. This is greater than 1. How many integral values of x will satisfy this inequality?
Now until the RHS is not 0, we can directly क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर RHS 0 होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए. Let me write it here. Do not cross multiply if the RHS is 0. Just keep this in mind. A lot of people sometimes do this mistake. They directly cross multiply. Never ever cross multiply when the RHS is 0. क्यों नहीं करना चाहिए? मान लो I'll just give you a simple ratio like this. I'll say A by B is greater than 0. So basically it means A by B is positive. So a ratio is positive. तो अगर तुम RHS में सीधा लेके B मल्टीप्लाई कर रहे हो तो you will conclude that A is positive. That is just one part of it. You completely ignored B and you said A is positive, but is it the only way that the ratio is positive? A positive, B positive, तब overall ratio is positive. There is also a possibility that A is negative, B is negative, and still the ratio is positive. But अगर तुम directly RHS में multiply करते तो you will completely miss out on that case. That's the reason I said never ever cross multiply when the RHS is 0. Rather पहले ये ऊपर multiply करो एक बार वो factor and then जाके multiply करना. वैसे क्वेश्चंस किए होगे पहले. जस्ट टू रिमाइंड यू, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई इफ द RHS इज 0. यहाँ पे 1 है तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. So I'll get square root of 2x plus 6 is greater than 1 minus x. Now squaring both sides, I'll get 2x plus 6 is greater than 1 plus x square minus 2x. थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो x square minus 4x. ये 2x इस साइड को आ गया, x square minus 4x. And then 1 minus 6 is minus 5. This is less than 0. Or I get x minus 5 whole into x plus 1 is less than 0. तो यहाँ पे मुझे क्या क्या रूट्स मिले? I got the roots as minus 1 and 5. So what you do is you plot the roots on the number line. Minus 1 and 5 and check with x is equal to 0. Does x is equal to 0 satisfy? Yes. तो ये होगा, ये नहीं होगा एंड ये होगा. सॉरी, उल्टा किया मैं. x is equal to 0 जो रेंज में है, that range will satisfy. So this range will satisfy and these two will not. That means I get x belongs to minus 1 till 5. ये तो सॉल्व हो गया. बट व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x will satisfy this? How many integral values of x will satisfy? Now think about this. This 1 minus x यहाँ पे जो है, जो डिनोमिनेटर है 1 minus x, square root of 2x plus 6 divided by 1 minus x. This is greater than 1. This should be positive. क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऊपर वाला नेगेटिव होना पड़ेगा, which is not possible. So if 1 minus x is greater than 0, I get x must be less than 1. अगर x less than 1 है तो minus 1 से 5 के बीच में if I combine this and this using these two results, I only get one possible value, that is x is equal to 0. This is the only integral value that satisfies. समझ रहे हो all of you? Hope this makes sense. Simple inequality का question है, nothing difficult about it. Just proceed with the inequality, get the range and then लास्ट को बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव नहीं आएगा तो डिनोमिनेटर हैज टू बी पॉजिटिव. 1 minus x पॉजिटिव है तो x must be less than 1 and if I combine these two the only possible value is x is equal to 0. This is how you approach questions on inequality. बहुत इजी टॉपिक है इनइक्वालिटी. हार्डली 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गया, हायर ऑर्डर इनइक्वालिटी हो गया एंड सम इनइक्वालिटीज लाइक दिस वेयर यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन रीअरेंज द टर्म्स एंड देन सॉल्व. तो उसको थोड़ा बहुत 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हारा एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा हाउ डू आई थिंक ऑन inequality. Apart from this, modulus inequality and logarithmic inequality, these are the two areas you should focus a little bit more on because वहां से questions आने के chances हैं. Let's move to the next one. Pipe and cistern, again a very common topic and very frequently asked in the exam. Pipe and cistern. Pipes A and B are inlet pipes while pipe C is an outlet pipe. Pipe A supplies water at 45 liters per hour
Pipe B can fill the tank in 3 hours while pipe C can empty it in 12 hours. तो पाइप B को टैंक फिल करने के लिए 3 घंटा लगता है and pipe C is the outlet pipe and it can empty it in 12 hours. पाइप A का अभी तक मुझे पता नहीं है but B and C को लेके let the tank with 12 parts. So pipe B is like it will fill 4 parts per hour and pipe C is like -1 part per hour. -1 indicates it is emptying. मैंने 12 क्यों लिया? 12 is the LCM of 3 and 12. Convenience of calculation. डिविजन इजी होगा इसीलिए LCM ले लिया. बोल रहा है जब तीनों टैप मिलके ओपन हो गया A plus B plus C तो द टैंक गेट्स फिल्ड इन 1 hour. 1 घंटे में फिल हो जाता है. 1 hour मतलब A plus B plus C is like 12 parts per hour. So B plus C is like 4 minus 1 3. This implies A is like 9 parts per hour. अगर A का कैपेसिटी मेरे को लाइक रेट ऑफ डूइंग वर्क मिल गया 9 पार्ट्स पर आवर क्योंकि A plus B plus C is 12 पार्ट्स पर आवर क्योंकि 1 घंटे में फिल हो रहा है 12 पार्ट्स एंड B 4 पार्ट्स है C -1 है तो A has to be 9 पार्ट्स. तो व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पाइप B? अब देखो ये जो 9 पार्ट्स पर आवर है क्वेश्चन में तो 9 पार्ट्स में नहीं दिया था. क्वेश्चन में बोल दिया था A का सप्लाई इज 45 लीटर्स. तो 9 parts per hour is equivalent to 45 liters per hour. So 1 part is same as 5 liters. So B is like 4 parts per hour, which is like 20 liters. A very basic question, 20 liters per hour. आरुष कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो उसके लेके. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is not very relevant because in the past you have not seen a lot of questions coming from that area. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो इंपॉर्टेंट उसमें क्या है? लाइंस. टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइंस आर. I hope this question is clear. To answer your question, Arush, lines and different ways to express the equation of line. जैसे y is equal to mx plus c. उसमें ये m जो होता है slope. What is the meaning of slope? And c is your y intercept. What is the meaning of intercept? ax plus by plus c is equal to 0. Another way to write the equation of a line. X by a plus y by b is equal to 1. Another way of writing the equation of a line. A is the x intercept, b is the y intercept. Then different ways to write the equation of line. Y minus y1 is m into x minus x1. Then y minus y1 is like y2 minus y1 by x2 minus x1 whole into x minus x1. ये सारे चीजें important है because these are very fundamental stuff. If lines are equal then their slopes are, lines are parallel then their slopes are equal. If lines are perpendicular then the product of the slopes is -1. ये basics बस cover करो. ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डीप में जाने की जरूरत नहीं है. डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ही रहे हो तो डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला उतना देख लो एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस बस. दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू डील विद क्वेश्चन. ठीक है. So pipe and cistern you solve like this. It's a very simple question, nothing difficult. It's a simple question. Let us take a look at this one. Quadratic x plus 1 by x का square minus 4x plus 1 by x plus 3 is equal to 0. So you take it in this way. Let x plus 1 by x is equal to m. So I get m square minus 4m plus 3 is equal to 0. So I get m minus 3 into m minus 1 is equal to 0. So m is like 1 or 3. Now can m be 1? If m is 1, this implies x plus 1 by x is equal to 1. This is not possible. Any number plus its reciprocal cannot be 1 greater than equal to 2. So it is not possible. So that means x plus 1 by x is 3. उसको यहाँ पे सॉल्व करें. यहाँ पे याद रखो if x is a positive real number that means x plus its reciprocal it has to be greater than equal to 2.
Is my video stuck? Just a second. Yeah, I hope it is fine now. So as I was saying, any positive real number plus its reciprocal is always greater than equal to 2. So that is why मैंने ये part reject कर दिया कि x plus 1 by x का value 1 नहीं हो सकता, तो 3 होगा. अगर वो 3 हो रहा है तो अभी इसको थोड़ा solve करता है. So this is like x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Again I get a quadratic. तो इसमें रूट्स का वैल्यू क्या आएगा, 3 प्लस और माइनस बी स्क्वायर minus 4 into 1 into 1 divided by 2a. So I get x is 3 plus or minus root 5 by 2. तो दो वैल्यूज आएंगे बेसिकली, 3 प्लस रूट 5 by 2 एंड 3 माइनस रूट 5 by 2. समझ रहे हो? बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, फाइंड द सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो बेसिकली दो ही रूट्स आए यहाँ पे मेरे, तो इनका सम ऑफ रूट्स कितना होगा, 3 आएगा बेसिकली. तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. लॉट ऑफ पीपल वुड स्किप दिस अगर ये चैप्टर पढ़े नहीं होंगे. So you'll have to practice a few questions. Quadratic, once you learn what is a quadratic polynomial, roots क्या होता है, how to find the roots, ये सब चीजें समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, like half an hour, 1 hour maybe. But I need to solve a variety of questions because that will like help me start thinking on a new question. जैसे x plus 1 by x को m लेना है तो वो easy हो जाता है उसका सॉल्विंग. अगर मैं पूरा टाइम x plus 1 by x को लेके इसको अगर मैं ओपन कर दिया, then it just gets complicated. So how do you get this sense that open नहीं करना है, substitute करना है, ये sense आएगा कहाँ से? Just by practice. You should have solved similar questions in the past so that देख के mind में आएगा नहीं इसको open करेंगे तो फंस जाएंगे, ये complicated हो जाएगा. So that sense has to be developed. Okay, that is the whole purpose of practicing. Because whatever questions you are solving right now, it is not going to be asked in the exam. Exam you will get all 22 new questions. So if I'm getting 22 new questions, so my preparation should aim at like enabling myself to solve new questions. How do I develop that thinking process? Okay, so always prioritize on that aspect. So I hope this is clear now, this question. Just a quick announcement, Unacademy CAT-alyst batch starting November 10th. So you can use my code and get a plus or iconic subscription and avail a 10% discount on using this code, and you can join the batch. These are some batch highlights. क्या क्या होगा batch में, courses and practice questions and recorded videos, doubt solving. If you are interested, do join the batch. Let us come to this one, a simple question on ratio. In a group of 4 friends, A, B, C and D, there are 4 friends, A, B, C and D. The ratio of weight of A to that to the weight of B is 3:2. इनका weight का ratio है 3:2. Ratio of weight of B to that of C is 5:6. एक बहुत ही just simple सा concept ratio का है. If the weight of D, which is half the weight of A, is 37.5 kg. तो पहले इन तीनों का सॉल्व करते हैं. जो कॉमन लिंक है 2 and 5, इसको सेम करते हैं पहले, बिकॉज B इज कॉमन इन बोथ द रेशियोज. तो B यहाँ पे 2 पार्ट्स है, यहाँ पे 5 पार्ट्स है, तो आई टेक लेट इट बी 10 पार्ट्स. तो अगर ये 5 टाइम्स हुआ तो A को भी 5 टाइम्स करके 15 करेंगे. एंड व्हेन 5 बिकम्स 10 2 टाइम्स, 6 विल बिकम 12. So basically A is to B is to C is 15 is to 10 is to 12. And अगर A 15 हो रहा है, then weight of D, which is half the weight of A, so D is like 7.5. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा असाइन करूंगा कॉमन रेशियो, ये 15x, 10x, 12x एंड 7.5x. एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है.
जस्ट द कॉन्सेप्ट इज हाउ डू यू इक्वेट टू रेशियोज। तो उनका जो कॉमन लिंक होता है उसको सेम कर लो एंड देन अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई। पहला रेशियो में 5 मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रेशियो में 2 मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू गेट द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ A is to B is to C. Now if 7.5x is 37.5 kg, that means x is basically 5. If x is 5, then weight of C is like 12x, so 60 kg. Option 1. समझ रहे हो? People attending live, I hope this is clear. Not very difficult questions, simple questions. Exam you should be alert for these kind of questions. Very likely these kind of questions will be asked. But इसको तुम कितना जल्दी कर पा रहे हो, that is the like point. You should solve these questions like 30 seconds, 1 minute के अंदर, so that you will save some time for other questions जहाँ पे time लगेगा. Even if you know some questions, पूरा crystal clear तुम्हारा approach है, फिर भी कभी कभार 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं कुछ questions. तो अगर वो question में 3 मिनट I have to spend, I should solve few other questions in less than a minute, तभी balance हो पाएगा. समझो, जो क्वेश्चन हमें आ रहा है हमें पक्का पता है कि ऐसा सॉल्व होगा, वी शुडंट टेक मोर देन अ मिनट. दैट शुड बी द लेवल ऑफ प्रैक्टिस. अगर पता ही है ऐसा करना है, एग्जैक्टली स्टेप्स वी नो हाउ टू सॉल्व, व्हाई टेक मोर टाइम? विल ट्राई एंड कैलकुलेट एज फास्ट एज पॉसिबल, इजंट इट? लेट अस सी अ क्वेश्चन ऑन दिस वन. डिसऑनेस्ट मर्चेंट क्वेश्चन बहुत कॉमन है प्रॉफिट लॉस में. डिसऑनेस्ट मर्चेंट क्वेश्चन, जो चीट करता है मर्चेंट. तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या कर रहा है ना, मिक्सेस 250 ग्राम्स ऑफ सैंड इन 1 kg ऑफ राइस. 250 grams of sand in 1 kg of rice is like 25% adulteration, and 25% अगर सैंड फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसका डायरेक्ट 25% प्रॉफिट हो रहा है. ऑलवेज रिमेंबर, अडल्टरेशन इज अ डायरेक्ट प्रॉफिट. जब भी तुम अडल्टरेशन कर रहे हो वो डायरेक्ट प्रॉफिट है, बिकॉज इट डायरेक्टली इंक्रीजेस योर क्वांटिटी एंड तुम उतना एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल करो तो उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सीधा सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट. Then 350 grams of the mixture is spilled during the transportation. He then uses a faulty balance that reads 1 kilogram for 800 grams while selling the mixture, which is listed at the cost price of rice. If the rice costs rupees 70 per kg and sand costs rupees 20 per kg. ठीक है, तो यहाँ पे सैंड का कॉस्ट है, सैंड इज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे 25% प्रॉफिट नहीं बोलेंगे. अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो डायरेक्ट 25%. राइस का कॉस्ट है ₹70 पर केजी, सैंड का कॉस्ट है ₹20 पर केजी. तो पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगा ना, एक साइड में तुम्हारा राइस है, एक साइड में सैंड है. राइस का प्राइस इज ₹70, सैंड का प्राइस इज ₹20, एंड तुम 1 kg राइस में 250 ग्राम्स, तो 1:4. एलिगेशन में वो 4:1 हो जाएगा. तो 5 parts is equal to 50, 1 part is 10, 4 parts is 40. Hence cost price of the mixture, sand add करने के बाद मेरा cost price of the mixture is ₹60 per kg. Okay, this is the cost price of the mixture. समझ रहे हो? Now let us see the question one step at a time. उसके पास अभी है 1250 grams of the mixture and इसका कॉस्ट कितना आएगा? ₹75. 75 कैसे? 1250 ग्राम्स में 1 kg का प्राइस तो हमें मिला 60, तो बाकी 250 ग्राम्स का प्राइस कितना आ जाएगा? 15. तो 75 होगा. उसका एक्चुअल खर्चा 75 नहीं हुआ. समझ रहे हो? उसका अगर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है ₹60 पर केजी एंड उसके पास 1250 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर है, तो उतना मिक्सचर का प्राइस कितना है ना, 75. उसमें से क्या हुआ ना, स्पिल हो गया. कितना स्पिल?
350 ग्राम्स उसका वेस्ट हो गया, मतलब गिर गया कहाँ पे, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इट इज स्पिल्ड। तो हाउ मच क्वांटिटी लेफ्ट, 1250 माइनस 350, तो 900 आ जाएगा। 900 ग्राम्स उसके पास अभी बचा है। ओके, व्हाट ही इज डूइंग इज, उसका यहाँ पे कितना प्रॉफिट रहा, ट्राई एंड सी दिस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट व्हेन, उसका दो टाइप का बेसिकली प्रॉफिट रह रहा है। एक प्रॉफिट आ रहा है जब वो अडल्टरेशन कर रहा है बाय एडिंग सैंड, दैट इज वन टाइप ऑफ प्रॉफिट। द सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉफिट इज जब वो ऐसा चीट कर रहा है। चीट जब कर रहा है उसका कितना प्रॉफिट आ रहा है, देखो चीटिंग में, इंस्टेड ऑफ 1 kg is giving you 800 grams, so profit is equal to 200 grams on 800. A lot of people take 200 on 1000, but mark this that उसका कभी 1000 grams खर्चा हुआ ही नहीं, 800 grams खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट उसका हो गया 25%। इन द फर्स्ट केस व्हाट इज हिज प्रॉफिट, फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितना हुआ, 250 ग्राम्स, वो ही इज ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट प्राइस फ्रॉम 70 to 60 रुपीज, यहाँ पे भी उसका प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जब कोई आके उसको पूछ रहा है कि 1 kg मेरे को दो, 1 kg, तो 1 kg की जगह उसको 800 ग्राम्स देगा, वो उसका नेचर है, इंस्टेड ऑफ 1 kg 800 ग्राम्स, तो 1 kg 800 ग्राम्स, ठीक है। उसका कितना पैसा खर्चा हुआ यहाँ पे देखो, 75 रुपीज उसका कॉस्ट था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 75 रुपीज, 75 रुपीज खर्चा होके अभी कितना उसको मिल रहा है वापस, देखो कोई कस्टमर आके अगर उसको 900 ग्राम्स मांग रहा है, तो 1000 ग्राम्स के जगह वो उसको दे रहा है 800, तो 1 ग्राम की जगह देगा 8/10, तो 900 ग्राम्स की जगह कितना देगा, तो उसको 720 ग्राम्स देगा बेसिकली, बट 900 ग्राम्स का कॉस्ट चार्ज करेगा। तो ऑलवेज फाइंड द कॉस्ट इनकर्ड एंड द सेल्स प्राइस रियलाइज्ड, ये दो चीजें बस निकालना, फिर इजीली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। The most important part in these kind of questions is cost incurred and sales price realized. Not a difficult question. These all questions are very common and just one step at a time. Just question पढ़ते पढ़ते करते चलना है कि उसका एक्चुअल कितना खर्चा हुआ उसके पॉकेट से। जब कोई कस्टमर आके उसे मांग रहा है तो वो कस्टमर को दे तो नहीं रहा है 1 kg। अगर कोई कस्टमर 1 kg बोलेगा 800 ग्राम्स दे रहा है वो, तो सिमिलरली उसके पास जो 900 है, कस्टमर को बोलेगा कि आप 900 ले लो, बट एक्चुअली कस्टमर को दिया वो 720 ग्राम्स। तो कॉस्ट इनकर्ड कितना है उसका, 720 ग्राम्स का। उसका पर ग्राम कॉस्ट प्राइस कितना है, पर केजी का कॉस्ट प्राइस उसका 60 है, तो 720 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 720/1000 इंटू 60, इतना उसका कॉस्ट प्राइस है। 72 इंटू 6 43.2 रुपीज, ये उसका कॉस्ट इनकर्ड है। बट सेलिंग प्राइस कितना लेगा, वो बोलेगा कि मेरा 900 ग्राम्स आप ले रहे हो मेरे से, तो आई एम नॉट कीपिंग एनी प्रॉफिट, आई एम सेलिंग एट माई कॉस्ट प्राइस। तो उसको पूछेगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना है। अब कस्टमर को नहीं पता है कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, वो बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस मेरा 1 kg का है 70 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस मेरा उस हिसाब से वो बोलेगा कि 900 ग्राम्स का कितना है, 1 kg का अगर 70, 900 का 63। समझ रहे हो? So the most important part in these kind of questions is two things. First is cost incurred. Always have a calculation of this thing, cost incurred. ये पार्ट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इनकर्ड। यहाँ पे ही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज व्हाट लाइक मेक्स यू डू मिस्टेक। कॉस्ट इनकर्ड आ गया एंड देन सेलिंग प्राइस रियलाइज्ड। एनी टाइम यू गेट अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट क्वेश्चन, जब भी आएगा जस्ट कीप दिस टू थिंग्स इन माइंड, ऑलवेज विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। So these were the questions for today's session. Hope you guys understood these questions. Keep practicing like such questions more and more. जो भी पढ़े हो अभी तक उसको regularly revise करते रहो, so that is more important. Don't
stress yourself too much with new questions and new topics and new areas last moment में. जो भी पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, सही पढ़े हो, try and use it in the exam. कोई चैप्टर से एक दो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, that doesn't mean that तुम्हारा एग्जाम का preparation has gone wrong. Previous year questions are available in the test format, so give the previous year questions on the Unacademy platform. Very important to understand how questions are asked. एक चैप्टर का expectations क्या है, SICI में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायमंड वर्क किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस सीरीज किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉग का किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो एक आइडिया रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लास्ट 5-6 years के क्वेश्चंस. And if you're struggling with the VRC part, Let's Crack Verbal is a new channel YouTube में. Do subscribe to this. You'll find very useful content to help you boost your VRC score. And as I said, plus iconic plans है ये. So if you are planning to take a subscription plus or an iconic, depending on your requirement, you can take one. Don't forget to use my code DASHLIVE and get a 10% discount on your subscription. Okay. That is it from my end for this session. We'll meet again tomorrow with another revision session. Keep a last mile ka. So keep solving, keep practicing, and if you are new to the channel, please like the video and subscribe to our Unacademy CAT-alyst channel. Thanks a lot once again. Have a nice day, everyone.